Hello everyone, welcome to Concept and Fact of Life Sciences. Today in this video, we are going to discuss about the plasma membrane. In our previous video, we have already discussed about the cell introduction, in which we have studied about the cell theory, exceptions to the cell theory, about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell, also about the cell structure as well as the kingdom system. In this video, we will start with the different component of cell. The most important component, it is the plasma membrane. Now this plasma membrane, it is generally made up of two things, that is lipid and the protein. So we can say the plasma membrane, it is lipoproteinaceous in nature. The function of this plasma membrane is to keep the compartment separate from the external environment. किसी भी कंपार्टमेंट को बाह्य वातावरण से अलग बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है. If you talk about the composition of this plasma membrane, it is generally made up of 50% of the protein, 50% lipid, and there is a presence of plus minus 1% sugars or the carbohydrates along with some amount of the cholesterol. Now, depending upon the function of a membrane, membrane के कार्य के आधार पे ये जो composition है 50-50% वाला, it can vary. For example, if we talk about the mitochondrial inner membrane structure की अगर अपन बात करें, the mitochondrial inner membrane, it remain folded into the higher level structure which is called as cristae in order to increase the surface area. क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑन दिस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन देयर इज a presence of 5 important protein complexes, and these protein complexes, they are involved in the process of electron transportation chain. Okay, now this type of very many chains, they remain present on this inner mitochondrial membrane, and their function is to convert the reducing energy, that is NADH and FADH, into the energy currency that is called as ATP. Now within the mitochondrial matrix, we have very many reactions, that is Krebs cycle and beta oxidation in case of animals, that generate reducing power, and this electron transportation chain, it will convert that reducing power into the energy currency, that is ATP. So the function, the major function of this inner mitochondrial membrane is to carry out the electron transportation, and for to carry out, or we can say to carry out this electron transportation, they requires very many numbers of protein. So if we talk about the composition of inner mitochondrial membrane, it is made up of 70% of protein and 30% of lipids due to the requirement of more amount of proteins. Similarly, if we talk about the another example, that is the neuron myelin sheath. We can draw over here the structure of a neuron which is having the axon terminus. There is a presence of a axon, and this structure, it is called as dendrites. आगे बात करेंगे when we talk about the animal physiology. Now onto this axon, there is a presence of a myelin sheath, and the function of this myelin sheath, this is the myelin sheath, and the function of this myelin sheath is to provide the insulation. जैसे अपन देखते हैं घरों में जो वायर्स होते हैं उनके चारों तरफ रबर की कोटिंग होती है, दैट टू प्रोवाइड द इंसुलेशन. सिमिलरली जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सॉन्स के ऊपर भी आपको इंसुलेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ए माइलिन शीट. So the function of this myelin sheet is to provide the insulation, and to provide the insulation they require more amount of lipid. So if we talk about the composition of neuron myelin sheet, it is 30% of protein and 70% roughly of lipids. So composition vary कर सकता है depending on the function of that particular membrane.
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक एक करके लिपिड्स और प्रोटीन के बारे में। स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट विद द लिपिड्स। लिपिड्स दे आर सिंपली द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, देयर आर फैटी एसिड्स, they remain attached through a ester bond to the polyhydroxy alcohol. So these are the esters of fatty acid and polyhydroxy alcohol. Polyhydroxy alcohol, if there is a presence of single OH group, it is called as monohydroxy alcohol. If there is a presence of two hydroxyl group, it is called as dihydroxy. And if there is presence of more than two hydroxyl group, then it is called as the polyhydroxy alcohol. The membrane, if we talk about the membrane lipids, the polyhydroxy alcohol, they can be divided into two types, or there is a presence of two different types of polyhydroxy alcohol in membrane lipids. These are glycerol and sphingosine. Glycerol, we can say it is a 3-carbon alcohol, and sphingosine, it is, we can say, 18-carbon alcohol. And this framework alcohol, that is glycerol and sphingosine, they are going to form different types of phospholipids and glycolipids. जो glycerol है basically it forms the phospholipids, while the sphingosine it forms phospho as well as some glycolipids, जिसके बारे में आगे अपन बात करेंगे. So the two major framework alcohol in the membrane lipids, these are glycerol 3-carbon alcohol and 18-carbon alcohol, that is called as sphingosine. पहले बात करते हैं ग्लिसरॉल लिपिड्स की. सो दीज आर कॉल्ड एज ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स. सो द फ्रेमवर्क अल्कोहल ओवर हियर, इट इज द ग्लिसरॉल having the 3 hydroxyl group, and there is a presence of fatty acids. These are the fatty acids. These are called as acyl chain because they are having more than 2 number of carbon. Number of carbons are not fixed, so simply they are the acyl chains. Up we can add these acyl chains or fatty acid onto the glycerol. So there is a intramolecular condensation reaction over here that leads to the removal of water molecule H2O, and there is a formation of a bond, that is OCO bond. इसे अपन कहते हैं एस्टर बॉन्ड. This bond, it is a ester bond. Okay, so lipids, they are esters of fatty acid and polyhydroxy alcohol. Now this structure which is formed over here, this is called as the monoacyl glycerol because there is an addition of a single acyl chain through a ester bond. That's why it is called as monoacyl glycerol. Next, if there is an addition of another acyl chain onto this monoacyl glycerol, suppose ये अपन एक fatty acid ले लिया, and if we add this fatty acid onto the second position of this glycerol, again through a condensation reaction which includes the removal of H2O, and again there is a formation of a ester bond, then this structure is called as diacyl glycerol. We are having a glycerol along with 2 acyl chain, इसलिए इसको अपन कह रहे हैं, यहां पे भी क्या है, ester bond. That's why it is known as a diacyl glycerol. Now this diacyl glycerol, it will act like a precursor for all the glycerol phospholipids. तो जितने भी ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स बनेंगे उनकी स्टार्टिंग या उनके जो प्रिकर्सर है वो क्या रहेगा, डाइएसाइल ग्लिसरॉल रहेगा. इसी से उनका फॉर्मेशन होगा. सो इट विल एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर ऑल द ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड, दैट इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल. तो इसको भी हटा लेते हैं अपन. इफ देयर इज ए एडिशन ऑफ अनदर fatty acid onto this glycerol,
Then the structure, again there is a condensation reaction, and through this condensation reaction there is a removal of H2O and there is a formation of a ester bond. There is formation of a ester bond. Then the structure is known as the triacyl glycerol. This is the structure of a triacyl glycerol. Now this triacyl glycerol, it is the stored form of glycerol. It is the stored form of glycerol. So the glycerol, it is stored, the lipids, they are stored in the form of triglycerides or triacyl glycerols. So इसके फॉर्म में लिपिड्स को स्टोर किया जाता है, but the framework structure which forms all other glycerol phospholipids, it is the diacyl glycerol. So the triacyl glycerol, these are stored in most of the organism as a source of energy, while the diacyl glycerol, it will act like a precursor for all the glycerol phospholipids. So we will start with the diacyl glycerol, and this is the structure of diacyl glycerol. So दो acyl chain है, एक glycerol है, and there is a presence of a hydroxyl group. Now this part which is having the hydroxyl group, it is called as the hydrophilic or the polar groups. While they are diacyl glycerol, it is also having two fatty acid chains which is hydrophobic. So the molecule which is having both hydrophilic and hydrophobic groups, it is called as amphipathic in nature. उसको बोलते हैं अपन amphipathic molecule. So the diacyl glycerol, it is a amphipathic molecule. Now जब lipids को draw भी करते हैं अपन, तो भी कुछ इस तरीके से draw करते हैं, which is having a polar head and two non-polar tail. अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको अपन कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल. सो द डायसाइल ग्लिसरॉल इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल. नाउ द polarity or hydrophilicity which is provided by this OH group to this diacyl glycerol, it is not too much. So to further enhance the polarity, very many groups can also be added in the form of phosphate and ethanol amine. Hydrophilicity क्यों जरूरी है? Because the membrane, as we all know, that it is semi-permeable and it is also selective permeable. So कुछ polar molecules हैं that can be transported. That can also be transported through these plasma membrane. उसके लिए क्या जरूरी है कि membrane जो है वो hydrophilic भी रहे, उसमें हाइड्रोफिलिसिटी भी रहे, और वो हाइड्रोफिलिसिटी अगर अपने को मेंटेन करनी है, सो उसके लिए कुछ ग्रुप्स को और ऐड करना पड़ेगा अपने को डायसाइल ग्लिसरॉल पे, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स. लाइकवाइज इफ वी ऐड ए फॉस्फोरिक एसिड दैट इज सिंपली द H3PO4, अगर उसको आप ऐड करते हो onto this diacyl glycerol, again there is a condensation reaction that lead to the removal of H2O molecule, and there is a presence of oxygen, and there is a formation of bond between the diacyl glycerol and the phosphate. This structure is known as phosphatidic acid. It is a phosphatidic acid. Next, or we can say that this structure, it is of the phosphatidic acid. Now onto this phosphatidic acid, there can be the addition of a ethanol amine. Ethanol amine, simply ethanol, CH2CH2OH, and there is a presence of NH3 or amine group, so it is called as ethanol amine. If you add this ethanol amine onto this phosphatidic acid, simply again there is a condensation reaction,
that lead to the removal of H2O, and there is a formation of bond. Then the structure now known as the phosphatidyl ethanolamine. This structure is called as phosphatidyl ethanolamine. So दो तरीके के ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स अपने इस पेज पे पढ़े. एक phosphatidic acid, that is the simple addition of phosphoric acid onto the diacyl glycerol, and onto this phosphatidic acid, if there is an addition of ethanolamine, it will lead to the formation of another glycerol phospholipid, that is called as phosphatidyl ethanolamine. Next, this is the framework precursor, that is the phosphatidic acid having glycerol, two fatty acid chain and a phosphate group. If on this diacyl glycerol there is a addition of another molecule which is called as choline, again through the condensation reaction that includes the removal of H2O, and there is a formation of bond between the diacyl glycerol and the choline. The structure is now known as the phosphatidyl choline. This structure is known as phosphatidyl choline, which is another type of glycerol phospholipids. Next, if we remove this choline from here, this is again the structure of diacyl glycerol. Okay, it is a DAG, or we can say DAG with phosphoric acid. It is a phosphatidic acid. Okay. Onto this phosphatidic acid, if there is a addition of a serine molecule, serine, simply the serine is a amino acid which is having, it is a amino acid which is having CH2OH in their side chain. If there is an addition of this serine onto this phosphatidic acid, again there is a removal of water molecule, H2O यहाँ से remove हो जाएगा. There is a formation of bond between the serine and the phosphatidic acid that will lead to the formation of another glycerol phospholipid, and this time the phospholipid is known as phosphatidyl serine. Phosphatidic acid plus serine, the structure is known as phosphatidyl serine. So इसको भी अपन यहाँ से remove कर देते हैं. Again, there is a presence of again there is a presence of a phosphatidic acid. On this phosphatidic acid, if there is a addition of a sugar molecule, that is the inositol, अगर यहाँ पे inositol को अपन ऐड करें, again there is intramolecular condensation reaction that includes the removal of H2O. तो H2O यहाँ से remove हो जाएगा, and there is a formation of bond between this phosphatidic acid and inositol that will lead to the formation of another category of glycerol phospholipid known as phosphatidyl inositol. So this is the structure of phosphatidyl inositol. So glycerol phospholipid, they can be categorized into four types, that is the phosphatidyl ethanolamine, phosphatidyl choline, phosphatidyl serine and phosphatidyl inositol. Next, the framework alcohol now is the sphingosine. So it will lead to the formation of some sphingolipid. As we already discussed, through the framework alcohol sphingosine, there is a formation of two different categories of lipids. One are the phospholipids and other category is of glycolipids. So this is the structure of a 18 carbon sphingosine. On this 18 carbon sphingosine, if there is an addition of a fatty acid on its second carbon, and the addition here
इट इज नॉट थ्रू द एस्टर बॉन्ड, यहां पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज ए ईथर बॉन्ड. देयर इज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन व्हिच लीड टू द रिमूवल ऑफ H2O. Then there is a presence of this NH over here. Rearrangement हो जाएगा bonds का, and there is a formation of bond. Now this bond, it is not a ester bond, it is a amide bond, है ना. सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड अपन ने बात की थी जब अपन ने प्रोटीन्स पढ़े थे, वहां पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो भी एक तरीके का अमाइड बॉन्ड ही है. NH CO बॉन्ड वहां पे था, बट वो क्योंकि अमाइनो एसिड्स के बीच में था इसलिए इसको अपन टाइप ऑफ अमाइड बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे अपन कह रहे हैं इसको सिंपली अमाइड बॉन्ड. सो इफ देयर इज ए एडिशन ऑफ फैटी एसिड थ्रू ए अमाइड बॉन्ड onto this sphingosine, then the structure is known as the ceramide. इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो सीरेमाइड. जो ये स्ट्रक्चर बना है अभी इसे कहेंगे सीरेमाइड. सेकेंड पोजीशन पे अपने पास में क्या है, अमाइड बॉन्ड के थ्रू फैटी एसिड है, एंड वी आर हैविंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. On this ceramide structure, if there is a addition of a phosphate, जो आपका phosphate है वो ऐड हो जाए, कर देते हैं ऐड. अगेन फॉस्फोरिक एसिड है, इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, H2O यहां से रिमूव हो जाएगा, और जो आपका सीरेमाइड है फॉस्फेट है उसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा. और दिस phosphate, along with this phosphate, if there is a addition of a choline, phosphate ऐड हो जाए और उसके बाद में इस पे ऐड हो जाए आपका choline. कैसे ऐड होगा, वही कंडेंसेशन रिएक्शन है. H2O रिमूव कर लीजिए यहां से, एंड द एडिशन ऑफ ए choline. Then this structure it is called as sphingomyelin. ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्फिंगोमाइलिन. क्या हुआ है इसके अंदर, सिंपली अपन ने जो सीरेमाइड था, इसमें थोड़ा रिमूव कर लेते हैं समझने में आसानी रहेगी. दिस इज ए सेपरेट स्ट्रक्चर. सो सिंपली क्या किया अपन ने, स्फिंगोसिन पहले इस पे ऐड किया एक फैटी एसिड थ्रू एमाइड बॉन्ड, द स्ट्रक्चर इज नोन एज सीरेमाइड. और इस सीरेमाइड पे अगर आपने अटैच कर दिया क्या, फॉस्फोकोलिन, then it is known as sphingomyelin. उसे अपन कहेंगे sphingomyelin. Similarly, अगर जो आपका सीरेमाइड है, on this ceramide, उस पे मान लीजिए आपने ये कुछ भी ऐड नहीं किया, फॉस्फोकोलिन ऐड नहीं किया है, you are having a ceramide. On this ceramide, if there is a addition of a sugar molecule, और वहां पे सिंपली एक शुगर मॉलिक्यूल है वो ऐड हो गया है, इस तरीके से सपोज कीजिए वापस से कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे H2O रिमूव हो जाएगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. यहाँ पे कोई फॉस्फेट एडेड नहीं है, डायरेक्टली आपने क्या किया, शुगर को सीरेमाइड पे ऐड कर दिया. So these are called as the cerebroside. It is a glycolipid, and this glycolipid it is called as cerebroside. And if there is a addition of multiple type of sugar like glucose है, साथ में आपने fructose भी ऐड कर दिया, and so on, then the structure it is known as ganglioside. उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं ganglioside. ठीक है, सो दीज आर द ग्लाइकोलिपिड्स, इसे अपन कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स. कोई फॉस्फेट एडेड नहीं है, फॉस्फोलिपिड्स नहीं है, दीज आर द ग्लाइकोलिपिड्स, दैट इज सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड. द फ्रेमवर्क अल्कोहल इज स्फिंगोसिन. फर्स्ट देयर इज अटैचमेंट ऑफ ए फैटी एसिड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सेरेमाइड. सेरेमाइड के ऊपर अगर आपने सिंगल शुगर ऐड की, देन इट इज नोन एज सेरेब्रोसाइड. इफ मल्टीपल शुगर्स आर एडेड, दे आर कॉल्ड एज गैंग्लियोसाइड. दीज आर द ग्लाइकोलिपिड्स. दूसरी कैटेगरी जो अपन ने पढ़ी दैट इज ऑफ द स्फिंगोमाइलिन, वेयर देयर इज ए एडिशन ऑफ ए फॉस्फोकोलिन
onto the ceramide structure. So there are two categories of sphingolipid. One is sphingomyelin and other is the glycolipids. So this is all about the sphingolipids. Next, the structure of plasma membrane lipid. अब चाहे फ्रेमवर्क अल्कोहल स्फिंगोसिन हो, चाहे फ्रेमवर्क अल्कोहल ग्लिसरॉल हो, we are having a polar head where there is a presence of a hydroxyl group that provide the polarity or hydrophilicity to the head, and there is a presence of non-polar tail. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, the molecule having both hydrophilic that is polar and hydrophobic that is non-polar ends or groups, that molecule is called as the amphipathic molecule. So we can say that the plasma membrane lipids, they are amphipathic in nature. उनका नेचर क्या है? एम्फीपैथिक है. All the amphipathic molecules, like the molecule which are having both hydrophilic and hydrophobic group, these molecules which are having both hydrophilic and hydrophobic group, if they are put in the polar solution. Likewise, in the biological system, you are having 60 to 70% of water. Okay, so these amphipathic molecule in a polar solution like water, they will get self-assembled. उनकी self assembly हो जाती है in the form of a bilayer. इस तरीके से सेल्फ असेंबली देखने को मिलती है. क्यों मिलती है? रीजन सिंपल है. जो वाटर लविंग एंड है वो वाटर की तरफ हो जाएगा और जो वाटर हेटिंग एंड है या हाइड्रोफोबिक एंड है वो अंदर की तरफ चला जाएगा. सो देयर इज ए एक्वस एनवायरनमेंट जिसके वजह से द एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल इन द एक्वस और द पोलर सॉल्यूशन दे विल सेल्फ असेंबल इन ए बाइलेयर स्ट्रक्चर. इसलिए अपने को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर में देखने को मिलती है. द मेजर ड्राइविंग फोर्स ओवर हियर इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. ये मेरा पहला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उसमें देख लेना आप, जिसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. वहां पे अपन ने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी पढ़े थे, जहां अपन ने कहा था कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, पोलर सॉल्यूशन, जिसमें अपन कह सकते हैं द वाटर इट विल गैदर द थिंग व्हिच आर इनसॉल्युबल इन इट. जो चीजें इनसॉल्युबल होती है उनको इकट्ठा कर देता है वो पोलर सॉल्यूशन. तो जो बाइलेयर बनने का कारण है इन द वाटर और द एक्वस सॉल्यूशन, इट इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन थ्रू विच द जो हाइड्रोफिलिक एंड्स है वो वाटर की तरफ हो जाते हैं और हाइड्रोफोबिक कोर इनर साइड में अरेंज हो जाती है. फर्दर स्टेबिलिटी टू दिस bilayer, it is provided by the van der Waal interaction. Likewise, there are two more structures which are called as liposome and the micelle. If we talk about the liposomes, these are the lipid bags we can say, है ना. जो liposomes होते हैं ये basically bilayer होते हैं. ये आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. ये lipids हैं. And in the liposomes there is a bilayer of lipid. This type of structure, these are called as the liposomes. These are the lipid bags. These bags are used for DNA delivery as well as for the drug delivery. सिमिलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइसील. माइसील में क्या होता है कि आपको केवल और केवल दीज आर ऑल्सो द लिपिड बैग्स बट दे आर सिंगल लेयर्ड. ये इस तरह से सिंगल लेयर्ड होते हैं, बाई लेयर्ड नहीं होते, जिसको अपन कह देते हैं दीज आर माइसील. ये स्ट्रक्चर. सो दिस इज माइसील एंड दीज आर द लाइपोसोम्स. These are the lipid bags which are used for the DNA delivery and drug delivery. अगर आपको हाइड्रोफोबिक ड्रग है उसकी डिलीवरी करनी है, then the best thing is the
माइसिल, और अगर ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक है, सो द बेस्ट ऑप्शन इज द लाइपोसोम सिंपली, क्योंकि यहाँ जो इनर कोर है वो हाइड्रोफोबिक है, यहाँ जो इनर कोर है वो हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि अंदर की तरफ भी क्या है, जो लिपिड्स है उनके हेड है, इस वजह से जो अंदर एनवायरनमेंट है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। सो दीज स्ट्रक्चर्स दे आर यूज्ड फॉर डीएनए एंड द ड्रग डिलीवरी, क्योंकि जैसे ही आप कोई फॉरेन डीएनए को फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप इंसर्ट करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उस ऑर्गेनिज्म के जो न्यूक्लियसेस होंगे उस डीएनए को फॉरेन पार्टिकल समझ के कट डाउन कर देंगे, ठीक है। सो उसको डिग्रेडेशन से बचाने के लिए और प्रॉपर न्यूक्लियस तक पहुंचाने के लिए आप किस सिस्टम का यूज कर सकते हैं, दीज लाइपोसोम्स दे कैन बी यूटिलाइज। सिमिलर इन द केस ऑफ ड्रग, क्या होता है कि मान लीजिए कोई ड्रग है जो आपने किसी लिवर सेल के लिए टारगेट करना है, लिवर तक पहुंचाना है, तो क्या करेंगे, उस ड्रग को लाइपोसोम्स के अंदर पैक कर देंगे, देन इट विल हैव द रिसेप्टर फॉर दैट लिवर सेल, और जैसे ही वो लिवर सेल उस रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करेगा, वो ड्रग उस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनल है उस तक टारगेट कर दिया जाएगा। सो एक पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उस तक ड्रग को टारगेट करने के लिए, डिलीवरी के लिए, these structures they can be utilized. नेक्स्ट अगर अपन बात करें मेम्ब्रेन असिमेट्री की, द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फेजेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर नॉट सेम। प्रोटीन में तो असिमेट्री होती है, बट द लिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आल्सो शोज असिमेट्री। सो सम ऑफ द लिपिड they exclusively remain present toward the outer face, some of the lipid they exclusively remain present toward the inner face, intrinsic face of the plasma membrane. Likewise sphingomyelin आपको extrinsic face पे देखने को मिलेगा, phosphatidylcholine it also remain present toward the outer face of plasma membrane. Similarly the phosphatidylserine and phosphatidylethanolamine they remain present toward the inner face of the plasma membrane, while the phosphatidylinositol remain present on both of the surface. So membranes के lipid हैं, ये भी asymmetry show करते हैं, they also shows the symmetry. Some of the lipid they remain present over the outer, some remain present over the inner face, and this symmetry is maintained by two transporters. One is called as lipase, other is called as floppase. The flipase, it is the P type, it is P type ATPase. ATPase के बारे में अपन बात करेंगे जब अपन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करेंगे, एंड दिस फ्लॉपीज इट इज ए ABC क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर, इट इज ABC ट्रांसपोर्टर which is ATP बाइंडिंग कैसेट्स। बोथ ऑफ दीज दे आर ATPases, दोनों को ही ATP की रिक्वायरमेंट रहती है अपना फंक्शनिंग करने के लिए। फ्लिप इन I, तो I है, इन है, यानी कि इट विल ट्रांसपोर्ट द phosphatidylserine and ethanolamine toward the inner face of plasma membrane. मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर phosphatidylserine और ethanolamine आउटर फेस पे है, that will be transported to the inner face of plasma membrane by this flipase। और इसी तरीके से अगर स्फिंगोमाइलिन और कोलिन अंदर की साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए तो उनको बाहर की साइड में ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा फ्लॉपेज, which is a ABC class of transporter. So the membrane asymmetry or symmetry it is maintained by the two transporter, that is flipase and floppase। O है आउटर फेस की तरफ भेजेगा, I है इनर फेस की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। Now this cholesterol it is called as temperature fluidity buffer. Why it is a temperature fluidity buffer? Because it maintains the semi-fluid nature of plasma membrane. Semi-fluid nature means ना तो पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से हो कि पूरी जम जाए, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा लिक्विफाइड हो कि वो पूरी की पूरी बिखर जाए। सो एक इंटैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो है जो किस नेचर में है, सेमी फ्लूइड नेचर में है। दैट इज एसेंशियल फॉर इट्स फंक्शनिंग बिकॉज द मेजर फंक्शन इज द ट्रांसपोर्टेशन। सो एक सेमी फ्लूइड नेचर के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाकर रखना है, एंड द मेजर रोल इट इज प्लेड बाय द कोलेस्ट्रॉल व्हिच विल एक्ट एज ए टेम्परेचर फ्लूइडिटी बफर। तो सेमी फ्लूइड नेचर कैसे मेंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल, बात करते हैं। एट हायर टेम्परेचर द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, दीज आर द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल्स, ये कोलेस्ट्रॉल है, these are the cholesterol molecule. At higher temperature, these cholesterol molecules, they will act like a dam, and the movement of lipid, it is only possible between the two cholesterol molecule. इससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हाई टेम्परेचर पर लिपिड मेल्ट होता है, लिपिड मेल्ट होगा तो लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करेंगे, बट these cholesterol molecules, they allows the movement only between them. इन दो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में ही ट्रांसपोर्ट होगा, मूवमेंट होगा, सो दे प्रिवेंट द लिक्विडिफिकेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट हायर टेम्परेचर, उसको इंटैक्ट बनाए रखते हैं. एट लोअर टेम्परेचर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए cholesterol which is a polycyclic structure. So due to the polycyclic nature, cholesterol, it do not allow the formation of strong hydrophobic interactions between the plasma membrane lipids. जो कोलेस्ट्रॉल है अपने पॉलीसाइक्लिक नेचर की वजह से it will not allows the formation of strong hydrophobic interaction at the lower temperature. इस वजह से वो मेम्ब्रेन को फ्रीज होने से बचा लेता है. At lower temperature, again it will maintain a semi-fluid nature. तो हाई टेम्परेचर पे डैम की तरह काम करता है, लिक्विफाइड होने से रोकता है, और लोअर टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बनने से रोकता है कि जिससे कि मेम्ब्रेन फ्रीज ना हो और कैसा नेचर बना हुआ रहे, सेमी फ्लूइड नेचर बना हुआ रहे. दैट इज एसेंशियल फॉर इट्स फंक्शनिंग. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल, it is a 27 carbon molecule, and all of these carbon, they comes from the acetyl coenzyme A. Now the plant, they don't have cholesterol, but they have cholesterol like substances like camptosterol, stigmasterol and cetosterol. It is the characteristic feature of animal cell. क्योंकि अपन कह रहे हैं प्लांट के पास में है नहीं, bacteria they are also not having the cholesterol. So the cholesterol, it is the characteristic feature of animal cell only. Bacteria lack cholesterol, but the bacteria they have, some bacteria, specific type of bacteria, that is mycoplasma, they have sterols that provide stability to their membrane. Again, this cholesterol, like the diacylglycerol, it is amphipathic in nature, having both hydroxyl and having both hydrophilic and hydrophobic groups. So it is again a amphipathic molecule. So this is all about the cholesterol, which will act like a temperature fluidity buffer. Next, membrane fluidity. The major difference between the lipid composition of different organisms, it depends upon the environment. Like environment के according जो membrane है उसकी composition को आपको regulate करना पड़ेगा to maintain the nature which is called as semi-fluid, that is essential for the activity of plasma membrane. Now this semi-fluid nature, it can be maintained by two things. One is through the degree of unsaturation, second through the chain length. If we talk about the degree of unsaturation, the fatty acid, they are of two types, saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. And simply the saturated ones which do not have the double bond, जिसके अंदर double bond नहीं हो, unsaturated which have the double bonds, and these double bonds, they are called as kinks, है ना? These double bonds, they are called as kink. Kink क्या होता है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. All the biological fatty acid, they have cis double bond, यानी कि जो डबल बॉन्ड है फैटी एसिड में दो तरीके का हो सकता है, cis ओरिएंटेशन में और ट्रांस ओरिएंटेशन में, but we are saying that biological fatty acid, they have cis double bond because if it remain present in the trans configuration, जहां यहां आप देख सकते हैं, अगर जो डबल बॉन्ड है वो किस कॉन्फ़िगरेशन में है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है, then there is no kink. वहां पे आपको कोई भी बैंड देखने को नहीं मिलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. But if there is a presence of a cis double bond, then due to the steric hindrance, there is a presence of a band or kink. इसी को अपन कहते हैं, it is a kink. So all the biological fatty acid concept लेके चलना, they have cis double bond which allow the formation of kinks. ठीक है, तो डबल बॉन्ड्स
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कैसे होते हैं, सिस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे एंड दे इम्पार्ट्स किंक, जिसकी वजह से किंक आते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट, सपोज कीजिए एनवायरमेंट 0 डिग्री है, 40 डिग्री है एंड 100 डिग्री है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, मेम्ब्रेन फ्रीज होने की कोशिश करेगी, फ्रीज होने की कोशिश करेगी। आपको नेचर कैसा मेंटेन करना है, यू हैव टू मेंटेन द सेमी फ्लूइड नेचर। तो उस कंडीशन में क्या चाहिए अपने को, दोनों की दोनों जो फैटी एसिड चेन्स हैं वो अनसैचुरेटेड होनी चाहिए, जिसकी वजह से देयर विल बी लेसर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और लेसर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा देन द मेम्ब्रेन रिमेन इन सेमी फ्लूइड नेचर। Like if there is a intermediate temperature like 40 degree centigrade, there is one fatty acid chain which is unsaturated, one is saturated. Again, there is lesser hydrophobic interactions और जो semi fluid nature है वो maintain रह जाएगा। But at higher temperature, that is 100 degree centigrade, वहां पे क्या है, the lipid it is going to melt now. उस कंडीशन में यू रिक्वायर मोर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यहां पे दोनों की दोनों टेल्स क्या है, फुली सैचुरेटेड रहेगी, दैट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड दैट विल मेंटेन द सेमी फ्लूइड नेचर। नाउ दूसरी चीज थ्रू विच यू कैन मेंटेन दिस सेमी फ्लूइड नेचर, इट इज द चेन लेंथ। चेन लेंथ, द फैटी एसिड दे आर ऑफ टू टाइप्स, long chain fatty acids and the short chain fatty acid. Again, depending upon the environment, we are having 0 degree, 40 degree and 100 degree centigrade of temperature. 0 degree centigrade temperature, again the membrane tends to freeze, the lipids tend to freeze. Then you should require a smaller chain length. Smaller chain length रहेगी तो number of hydrophobic interactions कम रहेंगे। इंटरमीडिएट टेम्परेचर, इंटरमीडिएट चेन लेंथ आपको चाहिए लाइक 20 कार्बन, यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस चाहिए। हायर टेम्परेचर के ऊपर लिपिड्स मेल्ट होते हैं, उस कंडीशन में यू रिक्वायर लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिससे कि ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस वहां पे रह सके, दैट मेंटेन्स द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी और द सेमी फ्लूइड नेचर। सो दो चीजों से अपन मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट कर सकते हैं एज पर द एनवायरमेंट। ठीक है, जैसा एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस यहां पे कर सकते हैं, जिससे सेमी फ्लूइड नेचर मेंटेन रहे। यहां से क्या कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं अपन, मोर अनसैचुरेशन, ज्यादा अनसैचुरेशन है तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कम होंगे और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ेगी, लाइक हियर, है ना, मोर अनसैचुरेशन, less hydrophobic interaction, and at 0 degree centigrade temperature you require lesser hydrophobic interaction to increase the fluidity। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो fluidity है वो increase हो रही है। Similarly, less unsaturation, unsaturation कम है, saturation ज्यादा है, more hydrophobic interaction, fluidity कम होगी, जैसा कि अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे देख रहे हैं। Here the both of these chains they are saturated, है ना, दोनों में ही अनसैचुरेशन नहीं है, तो अब जो फ्लूइडिटी है वो क्या हो जाएगी, दैट विल डिक्लाइन। हायर टेम्परेचर यू रिक्वायर लेसर फ्लूइडिटी, दैट विल मेंटेन द सेमी फ्लूइड नेचर। सिमिलरली मोर चेन लेंथ, चेन लेंथ अगर ज्यादा है तो देयर विल बी मोर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगे, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली लेस चेन लेंथ है, लेस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, फ्लूइडिटी बढ़ेगी, जैसे किस कंडीशन में चाहिए अपने को, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर चाहिए। सिंपली अगर अपन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इफ द ऑर्गेनिज्म और द बैक्टीरियल कल्चर which is on 0 degree centigrade temperature is transferred to 80 degree centigrade temperature, what kind of changes will occur in their plasma membrane lipid in terms of unsaturation and chain length? क्या फर्क पड़ेगा अनसैचुरेशन पे और क्या फर्क पड़ेगा चेन लेंथ पे, ये अपने को पता करना है। तो दो चीजें हैं, अनसैचुरेशन, चेन लेंथ, और ट्रांसफर किया आपने 0 से 80 डिग्री, यानी टेम्परेचर को आपने बढ़ाया है। तो टेम्परेचर बढ़ाया है तो अनसैचुरेशन क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंपली अपन देख सकते हैं
टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो अनसैचुरेशन कम होना चाहिए, सॉरी। सो जो अनसैचुरेशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और जो चेन लेंथ है, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो रिक्वायर मोर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो चेन लेंथ बढ़ जाएगी। तो अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा टू लो द फ्लूइडिटी। सिमिलरली जो चेन लेंथ है वो बढ़ जाएगी और टू लो द फ्लूइडिटी। सो सिंपली वी कैन से, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म को 0 से 80 पे किया तो अनसैचुरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा और चेन लेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट अपन यहां से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट is the lipid raft. Lipid rafts, these are the clusters of sphingomyelin, cholesterol and proteins that moves in a aggregated form. वो aggregated form में जाते हैं, aggregated form में movement करते हैं। In contrast to this, the lipids, they moves individually. जो lipids हैं वो इंडिविजुअल मूवमेंट करते हैं, बट दीज लिपिड राफ्ट्स दे मूव्स टुगेदर। These are found in the plasma membrane of prokaryotes, although their role is not clearly known, but they plays an important role in locomotion as well as in the attachment. So this is all about the lipid rafts. Now comes the movement of lipid, and there are 4 important types of movement of lipids, that is rotation, flexation, bobbling and flip flop. Okay, so this rotation, flexation and bobbling, they are called as spontaneous movement. इन्हें अपन कहते हैं spontaneous movement, while the flip flop it is a non spontaneous movement. Spontaneous movement means जो movement अपने आप हो जाए, that do not require the investment of energy, that is called as the spontaneous movement. While the movement which requires the investment of energy, it is called as non-spontaneous movement, and the non-spontaneous movement, it is the flip-flop movement. Rotation, if we talk about the rotation, there is simply the rotation of the head of this lipid. There is simple rotation that increases the fluidity. Similarly, there is a flexation, that is a flexation of these tails. The movement is called as flexation. Third is the bobbling up and down, that is the movement of upward down movement of these lipid. And these all movement they occurs within a single layer. यानी कि इस लिपिड्स का मूवमेंट इस लेयर में ही हो सकता है, इन लिपिड्स का मूवमेंट इस लेयर में ही होता है। सो यहाँ पे जो अक्रॉस द लेयर मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिक्वायर्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, एंड दीज आर कॉल्ड एज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। नाउ द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मींस the molecule, lipid molecule which is present over here, it will get transferred. Now this polar head, if it will get transferred through this non-polar interior towards the outer face of the plasma membrane, then this movement of lipid, it is called as the flip-flop type of movement. And if a hydrophilic head need to cross a hydrophobic core, then there should be a investment of energy. That's why this movement is non-spontaneous movement. So there is 2 category of movements, spontaneous and non-spontaneous, and there is 4 type of movements in lipids of plasma membrane. Next, the proteins. In the next framework molecule, it is the protein. In plasma membrane, there is 3 major categories of protein: extrinsic, lipid anchored and intrinsic protein. If we talk about the extrinsic or the peripheral protein, these are easily dissociable from the cell by simply giving the salt treatment or by increasing the pH. अब दोनों ही केस में क्या होगा, if you give the salt treatment, that NaCl-, the interaction of these extrinsic protein
with the plasma membrane lipids or the protein, it is ionic. यहाँ जो इंटरेक्शन है वो कैसा है? आयोनिक इंटरेक्शन है. Okay, and ionic interaction, as we all know that these are weaker interactions. So जैसे ही आप salt treatment देंगे, the charge on this Na plus it is greater than the charge on this protein, तो ये यहां से washed out हो जाएगा, remove हो जाएगा extrinsic or peripheral protein. So extrinsic protein, they are easily dissociable from the cell by giving the simple salt treatment or the high pH. The reason is the type of interaction these proteins have with the plasma membrane lipid or protein, and the interaction is ionic. So by giving the high ionic treatment, that is salt or the change in the pH, it will easily wash out these peripheral or the extrinsic proteins. Next is the intrinsic protein. They are not easily dissociable from the plasma membrane or the cell, because if you want to dissociate these protein, you have to dissociate the membrane. ठीक है, अगर आपको इंटीग्रल प्रोटीन्स को निकालना है, इंट्रिंसिक प्रोटीन को निकालना है, then you have to dissociate the membrane, and for this you require amphipathic solution, because like dissolve like, है ना. सो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स को आपको डिसॉल्व करना है, तो एम्फीपैथिक आपको सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे, लाइक एसडीएस, sodium dodecyl sulfate, or the sodium lauryl sulfate. This amphipathic solution can easily dissociate the membrane lipid to dissociate the integral or intrinsic proteins. Okay, so अगर intrinsic को हटाना है तो आपको membrane को पूरी तरह से dissociate करना पड़ेगा. If we talk about the secondary structure of these membrane proteins, the extrinsic protein, they are made up of beta sheets, while the intrinsic or integral protein, they are made up of alpha helixes. प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अपन ने बात की थी, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट. इंट्रिंसिक प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है आपके अल्फा हेलिक्स, एक्सट्रिंसिक का होता है बीटा शीट्स. Exception in biological systems are always there. We also have exceptions in the form of porins, and these porins, they are the intrinsic protein, but they are made up of beta sheets. Sometimes they form a barrier which is called as beta barrier. So the porine, these are the transporters that are intrinsic but made up of beta sheets. So in general, जो intrinsic होते हैं alpha helixes होते हैं, but porins क्या हैं? They are made up of beta sheets. Next type of proteins जो अपन लेते हैं. Now एक चीज और ले लेते हैं, the function of these protein. The plasma membrane proteins, they plays both structural as well as the functional role. If we talk about the structural role of these proteins, they provide structure, they maintain the structure, or they help in maintaining the structure of a cell. For example, the cytoskeleton. While if we talk about the function of these proteins, they include very many, like cell-to-cell interaction, cell signaling, etc. So these proteins, they have both structural as well as the functional roles. So next category of protein, it is the lipid anchored protein. Now this lipid anchored protein, both of these intrinsic, extrinsic protein, they forms weak interaction with the plasma membrane, while the lipid anchored protein, they forms the covalent interactions with the plasma membrane. If we talk about the lipid anchored protein, simply there is an addition of some lipid molecules to the protein, then these lipid molecules, they will get adhere within the plasma membrane lipids. So simply आपका जो lipid portion है वो जाकर के वापस plasma membrane से attach हो जाता है. So we can classify these lipid anchored protein into three different classes. First is the GPI anchored protein, which is called as glycosyl phosphatidyl inositol anchored protein, which remain present toward the outer phase and plays an important role in cell to cell communication. Cell to cell जो communication है उसके अंदर important role play करते हैं. Now these glycosyl phosphatidyl inositol, they generally attach to the C terminus. Now, likewise, we all know that one of the terminus of the protein is NH2, other is COH.
सो बिकॉज एक एंड अमाइन ग्रुप रखता है अमाइनो एसिड का, और नेक्स्ट जो रहता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, तो एक एंड एन टर्मिनस, दूसरा सी टर्मिनस. So this GPI is generally attached to the C terminus of the polypeptide through a linkage which is called as amide linkage. Okay. Next is the acylation. Acylation, it is of generally of two types, like meristylation and palmitylation. These are generally involved in the intracellular signaling processes. Now these acylation process they generally occurs as a post-translational modification. The mycetic acid is generally attached to the N terminus of the glycine residue through a linkage which is called as amide linkage. Similarly, the palmitic acid it attaches to the cysteine residues through a thioester, because cysteine they are sulfur containing amino acid. So जो palmitic acid attach होता है cysteine residue पे attach होता है, so palmitization जो होता है वो cysteine residue पे होता है through a thioester linkage. Now next process is the prenylation. Prenylation, generally there is a addition of some isoprene derivative like farnesyl 15 carbon and geranyl that is of the 20 carbon. They plays an important role in the small GTPase protein like RAS. जो RAS protein है, small GTPase G protein है, ये through this prenylation इसका attachment रहता है towards the inner face of the plasma membrane. So there is attachment of farnesyl or geranyl, and this farnesyl and geranyl that is the isoprenoids, they attaches to the C terminus of cysteine residues. Cysteine residues which are attached होते हैं and through a thioether linkages. So this is all about the लिपिड एंकर्ड प्रोटीन. सो इस वीडियो के अंदर अपन ने बात की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, बड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फ्लूइडिटी एंड ऑल्सो अबाउट द प्रोटीन्स. थैंक यू वेरी मच.